reality is that हम पाकिस्तान में एप्पल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं लेकिन एप्पल स्टॉक नहीं खरीद सकते। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग के नए सीरीज ब्लॉकचेन में, जहां हम जानेंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जो पाकिस्तान के लिए अगला रेवोल्यूशन बन सकती हैं, लेकिन जिन्हें अब तक समझना मुश्किल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इमर्जिंग मार्केट्स में फाइनेंशियल सर्विसेज को रीडिजाइन कर रही है। हमारे आज के गेस्ट है दानियाल अहमद, को फाउंडर ऑफ फैसेट, जो हमें समझाएंगे कि ब्लॉकचेन किस तरह लोगों तक ग्लोबल एसेट्स तक एक्सेस देता है, चाहे वो यूएस स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, कमोडिटीज हो या गोल्ड हो। इस एपिसोड में हम उनसे डिस्कस करेंगे टोकनाइजेशन असल में क्या होता है, गोल्ड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट को ब्लॉकचेन पर कैसे लाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन का फ्यूचर, और क्या पाकिस्तान मल्टी एसेट डिजिटल बैंकिंग के नेक्स्ट फेज के लिए तैयार है। Assalamu alaikum and welcome to Pakistan&Counting। मेरा नाम जुनीद इकबाल है and thank you for watching our blockchain series। आज हमें join किया है दानियाल अहमद ने, who is the co-founder of Fasset। Assalamu alaikum Daniel and welcome to Pakistan&Counting। वालेकुम सलाम, thank you for having me, appreciate it, शुक्रिया। Good to have you Daniel। सबसे पहले Fasset के बारे में बताएं, what is Fasset? हमारी कंपनी जो है, we've been on this mission के financial services can be brought to people in emerging markets. So we have a application just like a bank. So जो इस application में जो है बंदे अपने पैसे सेव कर सकते हैं, एक कार्ड प्रोडक्ट है जिससे आप स्पेंड भी कर सकते हैं उन पैसों को, लेकिन this is all been built on blockchain technology जिसके बारे में आप ये सीरीज कर रहे हैं। और the idea is that there are many assets that are available on this platform जो बंदे खरीद सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, and these are all the top assets that people can access globally. So things like US public equities, bonds, Islamic bonds जिस तरह होते हैं, commodities like gold. We are trying to enable people to get access to these type of assets basically on our application. So in a nutshell, in summary, is that we are building a digital bank for this part of the world. ये बताएं कि डिजिटली एक तरह से तो एसेट्स पहले भी अवेलेबल हैं। हम डिजिटल ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोलते हैं और हम डिजिटली शेयर्स खरीद सकते हैं। सिमिलरली हम बिल्कुल। कमोडिटी एक्सचेंजेस में अकाउंट खोलते हैं और वहाँ पर हम इसी तरह फ्रैक्शनलाइज्ड गोल्ड खरीद सकते हैं। रियल स्टेट में ये शुरू नहीं हुआ। रियल स्टेट की टोकनाइजेशन इज a new phenomenon and we'll come to real estate in a second. But to begin with, when it comes to stocks या gold, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम के जरिए इनको खरीदना एंड अदरवाइज खरीदना, हाउ इज इट डिफरेंट? What is the meaning of tokenization, right? It is a form, what we say in financial services, it's a form of securitization. So एक asset होती है, it's created in a structure that is now available on a different, what we say in this business, a different rail. So एक और तरीके से जो है ना बंदे खरीद सकते हैं इस asset को now. So पहले जो होता था, you go with Pakistani rupee into a Pakistani stock, or you go from US dollars into Apple stock. If this asset is now tokenized, it is now available on a blockchain rail. So अब मेरे पास एक asset होए जो same blockchain पे, if it's created on the same blockchain, it is now transferable on that blockchain. Basically, it's a new way to convert value. Or in the case of Pakistan as an example, what we are able to do today is we have worked with partners that have tokenized a US public equity or a real estate asset. And previously, assets that are inaccessible, given that we're going from Pakistani rupee into potentially a custodian account that would convert to US dollar, that would convert to the underlying stock, it kind of disintermediates all of these different steps and enables somebody to go directly from the local currency into this stock, basically. So the biggest use case जो हम देखते हैं हमारे markets में, it's about accessibility. The reality is that in emerging markets, especially across Asia and Africa, बहुत सारे बंदे हैं, I would say hundreds and hundreds of millions of people that are underbanked. ठीक है, उनके पास हो सकता है एक बैंक अकाउंट होए या हो सकता है उनके पास जैज कैश होए जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है they cannot access all these assets and all these great ways to actually build wealth. ठीक है, the great irony is that हम पाकिस्तान में एप्पल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं लेकिन एप्पल स्टॉक नहीं खरीद सकते।
There's reasons for this, obviously. Lekin what we're trying to enable is that people should have the ability to buy the underlying assets that can build wealth for them in a long period of time. तो दानियाल अब जिस तरह गोल्ड है फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड के ब्लॉकचेन पे आने के लिए देयर आर इशूअर्स सो पैक्सोस एक कंपनी है वो अपने पास गोल्ड को सिक्योर करती है और उसके टोकन्स फिर ब्लॉकचेन पर इशू कर देती है ये जो टोकनाइजेशन टोकन्स की इशुएंस का प्रोसेस है पहले गोल्ड की एग्जांपल देके समझाएं कि ये कैसे हो रहा है Bilkul. I mean, you already explained it in a bit of in a nutshell. The to tokenize an asset requires a off-chain element. हम इस इंडस्ट्री में off-chain कहते हैं, which means in the real world. और फिर एक on-chain element होती है, जो जब blockchain के ऊपर आ जाती है ये asset. In the off-chain world, what has to happen is there has to be a company. इस company के पास एक license होना चाहिए from a regulated, regulator to allow them to issue tokenized assets. Let's take the gold as an example, and let's take Paxos as an example. हमारे platform में आज जो है, one of the largest bought assets is gold, and actually it's Paxos gold, so it's a great example. Paxos जो है वो है New York में regulated, NYFDS. They have the license to issue these assets. वो जो है, they work with a custodian that will take this gold physically. They work with third-party independent advisors जो होते हैं, consultants जो होते हैं, जो आके verify करते हैं कि ये gold exist करता है in this vault as an example. Off the back of this, फिर जो है वो एक token issue करते हैं, right? So for every ounce of gold या जो भी उनकी tokenomics होती हैं, जैसे उन्होंने एक system setup किया होता है कि every token is equal to X amount of gold is then created basically. That is the token issuance process. ठीक है? In the gold example, it's quite simple. It's like commodity, a very simple commodity, and there's a real gold price. So what happens then is that this tokenized asset then follows the price of real gold market price. Okay? Because this is a very liquid market, it's made global price hoti hai. There's no differentiating factor. When you start to get to different types of assets, that's when things get more interesting and more difficult and more challenging. How do you value a real estate asset that is not as liquid as gold, as an example? So I don't know if that answers your question, but in a nutshell, that's what the issuance process. इट डज इसमें फिर सेफ्टी सिक्योरिटी लेयर्स क्या होती हैं एक तो आपने कहा कि जो लेट्स से पैक्सोस है वो अपने वॉलेट में गोल्ड रखता है और थर्ड पार्टी इसको वेरीफाई करती है फिर वो एक टोकन इशू कर देता है अब ये टोकन ब्लॉकचेन पर आ जाता है और लेट्स से अगर मेरा फैसेट में अकाउंट है मैं इस टोकन को खरीद सकता हूँ वहां पर इसकी क्या सेफ्टी है कि कैन दैट टोकन बी फेक्ड So it's a good question. So, हर step में जो है there are some levels of safety. ठीक है? पहले layer है there has to be a regulated entity. So there is a regulator that is overseeing this. फिर दूसरी element है कि as part of that regulation, when you are putting these assets into a vault, as an example, there are certain approved people that you can work with, again from the regulator. So these are all overseen. Then there's a third party independent entity that is vetting this. So that is also another level of security. अब ये सारा ऑफ चेन काम हो जाता है. Now you've created a token. Now it's coming on an application. This is where the same level of security जो हर token related project के साथ या हर cryptocurrency related exchange के साथ जो security protocols होते हैं in place, they're the same ones that are being implemented here. So I'll give you an example. हमारी केस में जो है, as a financially regulated entity ourselves, हमारी mandate हमारे regulators है कि हर asset is one-to-one backed with underlying fee, the customer deposit. So customer ने $100 के gold खरीदा, that has to exist, right? It cannot be that I can create something out of thin air, as an example. Now, can there be bad actors? Bad actors हो सकते हैं जो fake gold token create कर सकते हैं. Of course, this happens everywhere, right? You can always create something fake, let's say. लेकिन the verification and safety is the fact that you are operating with regulated entities, right? That's the highest level of safety in this environment that you can get. उसके अलावा जो है, you can, of course you can create different assets, different tokens that may not necessarily exist. But as long as customers जो interact कर रहे हैं with a regulated platform, that regulated platform should be able to show their customers कि कैसे ये verifiably कैसे ये देख सकते हैं कि ये gold exist करती है real world में. And I'll give you one example. हम अभी काम कर रहे हैं on a gold tokenized project with another company, जिसमें से बंदे directly gold deliver भी अपने घर में कर सकते हैं. So you can actually get the physical gold as well. So there's no higher level than security than that, right? I own a gold token. I can actually get that delivered to my house, basically. So that level of security, let's say, is what we will provide हमारे customers को.
सो अब गोल्ड जो है, गोल्ड इज गोल्ड, एन आउंस ऑफ गोल्ड इज एन आउंस ऑफ गोल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और सिमिलरली अगर एप्पल स्टॉक है, अमेरिका में लिस्टेड है, उसकी कोई कस्टडी रख के आपको टोकन दे देता है, एन एप्पल स्टॉक इज एन एप्पल स्टॉक एज लॉन्ग एज इट्स वेरीफाइड कि जो टोकन आपको दे रहा है उसके पास अकाउंट में एप्पल स्टॉक है। अब आ जाते हैं रियल स्टेट पर। तो रियल स्टेट की टोकनाइजेशन शुरू तो हो गई है दुबई में, प्रिप्को मिंट ने अपना एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को टोकनाइज कर दिया है। हाउ विल दिस गेट रोल्ड आउट के वेदर या दुबई है या पाकिस्तान है, ये जो इंडिपेंडेंट ओनर्स हैं बिल्डिंग्स के, हर एक अपना टोकन निकालेगा, इश्यूअर के पास जाएगा। हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। Bilkul, I was going to say this. The opportunity for real estate tokenization is actually really, really big, right? Isliye real estate, as you mentioned, as an asset class is huge and actually has a problem that gold doesn't have, which is that it's not liquid. Real estate there is no easy secondary market, right? So there are certain assets like REITs that enable some of this trading. Like in reality में जब एक building exist करती है, it's not a very liquid asset. And what that means is that the price discovery of that asset as well is not as quick as another asset basically. So tokenization जो है इस in this instance is meant to create a more liquid environment for these assets and enable again that accessibility. अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं 10 डॉलर की मैं दुबई में एक रियल एस्टेट खरीद सकता हूँ. So giving them exposure to some of these assets. Now to come to your question, इस वक्त जो है especially in Dubai, they are rolling out proof of concepts right now because जो regulator है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि how do we regulate this? What does the business model look like? Right? I like to say this line that regulation follows innovation. ठीक है, रेगुलेटर जो है वो पहले तो नहीं कोई रूल्स बना सकते. इन मेनी केसेस दे हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है एंड देन ऑन द बैक ऑफ दैट दे कैन क्रिएट द राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू सपोर्ट द इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्ट द कस्टमर्स. सो इस मामले में जो है इस वक्त रेगुलेटर्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं विद प्रिप्को एंड सम अदर प्लेयर्स टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज इवन व्हेन यू टोकनाइज इट्स अ स्पेक्ट्रम. एक सिंपल बात नहीं कि हमने टोकनाइज कर दिया. इट कैन बी देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स टू टोकनाइज एंड देन व्हेन यू कम टू रियल एस्टेट स्पेशली इन दुबई इतने डिफरेंट किस्म की projects होती हैं. There's off plan, there's already built, there's rented property, there's buying property, there's selling a unit, there's selling a floor. Both different किस्म की projects हैं, and therefore right now what's happening in terms of your question about rolling this out, they are trying to figure out कि कैसे इसको regulate होना चाहिए. So there's some guidelines around that. I think what you mentioned, जो भी बंदा आएगा, there could be a time anybody who owns a real estate asset could create a token off the back of that and then sell it. I think that reality will happen. अभी 3 साल में होएगा या 10 साल में होएगा, that is to be seen. I think it's probably longer term because it requires a lot of different things. लेकिन before that, what will happen is companies आएंगी जैसे प्रिप्को है, हम भी ये काम करेंगे. We are getting an issuance license under Fasset from the Virtual Asset Regulatory Authority in Dubai to enable tokenized assets, including real estate, because we see a huge opportunity. And what will happen initially is that companies like Pripco या Fasset जो हैं, जिनके पास ये licenses होंगे, they will have the teams internally to assess, value that real estate asset, create a token off the back of that. There's a process called tokenomics. It's the word tokens and economics put together. कि कैसे ये business model will translate into the token economy and the blockchain world. That whole process will take place, and then tokens are created, and off the back of that, there will be buying and selling and trading. The initial use cases are very simple. A property, worth 1 million dirhams, you create 1 million tokens. Every token is worth 1 dirham. You can only hold it, and you can only sell it once the property is sold. Yeah, there will be some sort of secondary market. Like in the price of the underlying asset will be predetermined. So there's a let's say a step-by-step process to this. It's not going to happen overnight, and it's happening slowly as the regulator and the businesses are figuring out कि कैसे ये asset जो है, how can we unlock the value using blockchain. इसकी जो ट्रेड पे इम्प्लीकेशंस हैं, जो बी टू बी यूज केसेस हैं कि लार्ज बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कि इंपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, और वो जो एक बायर होता है एक सेलर होता है, तो जो बायर होता है वो बाइंग कंट्री में अपने बैंक के जरिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलता है, और सेलर जो है एलसी के अगेंस्ट पे सामान को शिप करता है, तो उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है. वो एक कंटेनर में एक सर्टेन कंटेनर या सेट ऑफ कंटेनर्स में एक सर्टेन वैल्यू है जो एक बॉर्डर से शिप या
जिस तरह भी दूसरे बॉर्डर पहुंच रही होती है। इस तरह की जो यूज केसेस हैं जो कि जिसमें भी इतने मिडलमैन हैं, इतनी लेयर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसमें टोकनाइजेशन क्या करेगी? It's a good question. दो तीन यूज केसेस हैं. मैं आपको I'll tell you the most used use case today, and then I'll go to some of the other ones. आज जो है, there is the largest tokenized asset by value is the tokenized dollar. Right? आपने सुना है USDT के बारे में, USDC के बारे में. There are many stable coins. These are tokenized dollars because dollars are coming into a bank account and you're creating a token off the back of that. ये stable coins जो है ना are being used at a very high level right now. And when I say high level, I mean a lot of businesses are using them. It's, again, especially जिस markets में हम काम करते हैं, to send value cross border. And again, on both sides of this, there is an on ramp and there's an off ramp. There is a importer. That person needs to go from their local currency to this currency, this USDT. So there's an on ramp transaction. उसके बाद जो है, this importer will send the money to their exporting party. ठीक है? That value transfer, this is the innovation, I'd say, or the use case, is that transfer from me to send USDT to you. Doesn't matter जब मैं दुबई में, आप पाकिस्तान में, या मैं दुबई में और आप लंदन में. It's the exact same amount of time जो लगेगा. Right? It will take 10 seconds. It will not take longer than this. And this is the difference between sending a SWIFT transfer and sending a bank transfer. It becomes borderless. Right? This is one of the concepts in cryptocurrency. कि this concept of borders exist नहीं करते हैं in the digital asset world. जहाँ पे भी आप खड़े हुए हैं, आपके wallet में वो पैसे आ जाएंगे. ठीक है? Now, what happens is, just to finish that flow, on-ramp transaction आती है, पैसे are sent to the wallet, और दूसरे side पे जो है, उस company को, then they have to off-ramp basically into their own local currency if they want to use that, or they can keep it in USDT, USDC, because what's happening now is a huge network effect हो रहा है. Many companies are starting to accept these assets. Even IFRS standards and accounting standards are starting to recognize how ये कैसे accounting books में हम इनको, these assets can be managed effectively. So there's a very quickly a lot of progress that's happening on the stablecoin side, even from countries. 5 years from now, majority of transactions will happen with stablecoins. Okay, globally, and again, for the purposes of the speed and efficiency of what's going on. Now, this is one major use case. B2B payments and cross-border payments is happening very significantly right now, and Fasset actually has a big business on that as well. I think you and I spoke about this जब हम flight में थे, आ रहे थे पाकिस्तान से वापस to Dubai, where I was explaining to you some of the use cases there. The other kind of interesting things that exist with blockchain technology is things like supply chain monitoring, right? So आपने अभी एक example दिया था, there's a cargo ship and there's multiple parties in between, and especially again in emerging markets, कभी ये हो सकता है कि there are parties and they will skim some of the top and they will get paid a bribe, and बहुत चीजें होती हैं when there's a trade going on. A supply chain monitoring tool based on blockchain can allow for verifiability on where the assets are going or the goods are going. And because it's on the blockchain, what the blockchain enables you to do is that it's a decentralized database effectively. So कोई इस database को change नहीं कर सकता, basically, right? And that makes it more secure and more safe in the long term. So this is just another use case. It's not really a tokenization use case, it's more blockchain use case. Lekin the point I'm trying to make is that both different use cases निकलती हैं from this technology. One of them is tokenization, but there are things like supply chain monitoring and other blockchain-based use cases that can really enable more efficient and better, processes basically for trade, for many different industries. So अब वापस आते हैं जो फैसेट पर. नाउ फैसेट के लेट्स से आपके प्लेटफॉर्म पर टोकनाइज्ड गोल्ड है, टोकनाइज्ड स्टॉक्स हैं, इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कई एसेट क्लासेस हैं. अब इस तरह के नॉन काइंड ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करते हैं. ब्लॉकचेन बेस्ड मल्टी एसेट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो एक रेगुलर नॉन ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट से क्यों बेहतर है? अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, 5% गोल्ड लेना है, 70% स्टॉक्स लेने हैं, बाकी बॉन्ड्स लेने हैं, व्हाई एम आई बेटर ऑफ कि मैं फैसेट पे या इसी तरह के और किसी प्लेटफॉर्म पे इसको करूं? बिल्कुल सही कहा. It's a good question. So दो तीन चीजें हैं. एक है कि
हमारी कंपनी जो है वी आर ट्राइंग टू बी अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। सो हर मार्केट में हो सकता है पाकिस्तान में पीपल मे बी एबल टू गेट एक्सेस टू मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, लेकिन एक और कंट्री में हो सकता नहीं वो उनको ये ऑफर मिल सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि actually comes back to our name, right? We call ourselves Facet is because cryptocurrency and digital assets are multifaceted in nature. What that means is that cryptocurrency can be used to buy, to sell, to hold, to remit, to spend. You can create different products out of it. Digital assets and tokenized assets are a very unique thing. मैं आपको एक example देता हूँ। A few weeks ago हम अभी एक होटल में थे and the concierge desk I needed to print something. This gentleman was a Kenyan gentleman. मैंने अपना email address लिखा और वो कहता है कि मैं Facet को use करता हूँ। और मैंने उससे पूछा कि क्या करते हैं आप? वो कहता है कि मैं हर मंथ बिटकॉइन खरीदता हूँ, लेकिन मैं एप्पल स्टॉक खरीदता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक खरीदता हूँ। मेरे पास $100 होते हैं, मैं 10-15 स्टॉक्स खरीदता हूँ और फिर एंड ऑफ एवरी मंथ जो है मैं अपनी फैमिली को वो बेचता हूँ। एंड दिस इज द डिफरेंस, राइट? नाउ यू कैन सेंड somebody tokenized Apple stock. I can send you, I can remit it, I can receive it there, and then eventually what we will have on our platform is कि हम इस asset को collateralize करके एक Sharia compliant loan भी दे सकते हैं। So there are different use cases that come out when you have tokenized an asset. Makes an asset multifaceted, effectively. Right? You can do a lot of different things. So that's why it becomes very interesting. इसकी एडॉप्शन के बारे में बताएं कि आप लोग के अब एक्सपीरियंस में तमाम मुल्कों में इसकी एडॉप्शन किस तरह की हो रही है एंड गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स आज से कुछ 4-5 साल पहले जाएं तो तकरीबन हर मुल्क में ये चीज़ें बैंड थी। अब कई बड़े ममालिक में इसका फ्रेमवर्क आ गया है और अब पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इसका फ्रेमवर्क बन रहा है। तो tell me about the adoption of these kind of platforms and where do you see not just Facet but ये पूरी industry in 3 years? बिल्कुल। Look, the ये जो industry है, it's gone through a lot of up and down, right? And I think the initial use cases of cryptocurrency and digital assets were very speculative in nature. So बंदे जो हैं gambling कर रहे थे effectively, right? एक token है, ये 100 दफा ऊपर चला जाएगा, मैं जल्दी से पैसे बना लूंगा। लेकिन that is not sustainable. The reason why governments are becoming aware of this, the reason why regulations coming into this, the reason why there is huge adoption happening now, and to answer your question, har saal over the last 5 years, adoption I believe is increasing by 1 to 150% per year. ठीक है, on a cumulative aggregate growth rate, meaning कि हर साल nearly double जो है population आ रही है इस industry में। कोई बंदे जो है वो आ रहे हैं for the speculation, लेकिन a lot of people are coming into this because it's a necessity for them, ठीक है। So I'll give you an example. Turkey में the Turkish lira is one of the worst performing currencies in the world. हर साल जो है बंदे अपनी they lose 20, 30, 50% of their net worth just because of the devaluation of the currency. Latest figures that I've read is that nearly 40% of the adult population is converting Turkish lira into USDT because they need to hedge against the devaluation of the currency. Okay? Because in Turkey it's legal, it's not as difficult as Pakistan to get access. बंदे जो हैं at the very retail level वो अपने $100 लीरा जो है डॉलर में बना के hold कर रहे हैं at the very basic level, because they know that if I just do that I will at least make 20% on my money, right? I won't lose 20%. That's the first step. उसके बाद जो है the use cases across payments, the use cases across savings, the use cases across remittances, these are all becoming very clear. A lot of companies are starting to adopt these as well. And I get very surprised when I find out, for example, एक 2-3 बहुत बड़ी remittance companies हैं जो मैंने 3 साल पहले उनके साथ बात की थी और मैंने suggest किया था कि use stablecoins। उस वक्त जो है जैसे आप कह रहे हैं, many countries had banned it, it wasn't legal, banks had issues to deal with it, so it was very difficult. अब जो है मैं उन कंपनी से बात कर रहा हूँ and I'm finding out कि वो $500 million per month भेज रहे हैं using stablecoin, $200 million per month भेज रहे हैं using stablecoin, इसलिए for them it's quicker and more efficient, and now that there's regulated pathways, it's a no-brainer. I'm saving money doing this because I'm cutting out the middle people. So to answer your question, 3 साल में there will be ups and downs. The Bitcoin price will go from 130,000 to 50,000 to 80,000 to 150,000. Lekin that will be irrespective of the growth of this industry, because the growth of this industry is connected with real use cases, which is what Hamari company is focused on. We don't sell dog tokens and we don't sell futures products or giving people leverage and all that kind of crazy stuff that happens in the world. Hamari focus hai कि there are 2-3 billion people in the world जिनके पास या कोई एक्सेस नहीं है या मिनिमल एक्सेस है टू फाइनेंशियल सर्विसेज, वो हम चाहते हैं
they get access to, whether it's just being able to spend your money, or whether it's just being able to save your money in a Sharia compliant way, whether it's just being able to invest some of your money so that people can, the farmer in Afghanistan can buy Apple. Like that is something that is very unique. Yeah, we couldn't think about this 10 years ago. Just like Jazz Cash in Pakistan has become, proliferated in terms of payments in Pakistan. Why, right? Let's take that as an example. जब मैं आपको पैसे भेजूं Jazz Cash पे, I have no idea what technology is being used underneath. I don't know whether it's going through AWS, what protocol. I have no idea. The same way, even on Facet, हमारे जो retail customers हैं, उनको कोई idea नहीं कि ये blockchain based है, ये कोई custodian है अमेरिका में, कोई regulation है. No, it's just very easy, very seamless, very simple, and they're solving real problems for real people. That ultimately is the way technology has to grow. It's not that this is a layer 3 blockchain with TPS of 1 million. No, none of that stuff. It's very focused on helping people build wealth, save wealth, and do it in a way that is good for them. That is what our goal is, and inshallah, in the next 3 years, we will hopefully achieve, millions of people using this product to make that. Thank you so much, Daniel Ahmed, co-founder of Facet, and I'd also like to thank our sponsors here, Binance, जिन्होंने हमारी ये पूरी blockchain series को sponsor किया है, and to our audiences, I would love to understand from you comments में ज़रूर बताएं कि क्या आप multiple tokens खरीद रहे हैं अपने wallets में अब cash भी, stocks भी, gold भी, or not as yet. And if yes, then please do tell us about your experience. And thank you so much. And Khuda Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum.